Good morning, class 4th. How are you all? Today I am going to tell you about lesson 9, conversation on food. Okay, conversation on food. Situation first. Here you will find Chetan and Ankur. They are talking about the situation first. Do you know what to eat, when to eat, and how to eat? There is no tough in this word. Okay, Ankur is telling what a queer question you ask. What a queer question you ask. Okay, this word is, you have to just practice this one. Queer. What a queer question you ask. Chetan, it is an ordinary question. It is an ordinary question. My friend, it is an ordinary question. Ordinary, you have to practice this one word. It is an ordinary question, my friend. Next, Ankur, everybody knows the answer to this question. Everybody knows the answer to this question. Okay, situation second. Now here you will find Chetan, we should eat good and nourishing word, you have to practice this one. Nourishing food. Don't eat everything you like. Okay, we should eat good and nourishing. Okay, nourishing, here Hindi is written nourishing food. Don't eat everything you like. Next, Ankur, what do you mean by this? Chetan, I mean that there are so many bad things which we eat and so we fall ill. I mean that there is so many bad things which we eat and so we fall ill. Okay, Ankur, when should we eat? When should we eat? Chetan, we should eat only when we feel hungry. When we feel hungry. ठीक है, यहाँ कोई टफ वर्ड नहीं है. जो भी टफ वर्ड है मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ. अंकुर, डोंट वी नो हाउ टू ईट. डोंट वी नो हाउ टू ईट. नेक्स्ट, चेतन, वेरी फ्यू पीपल. लुक, पीपल वर्ड, ये देखो पीपल लिखा हुआ है ना. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वे. पीपल नो हाउ टू ईट प्रॉपरली. ठीक है, प्रॉपरली. वेरी few people know how to eat properly. Chew your food well before it is swallowed. Before it is swallowed. Do you know? Do you do so? Swallowed. Do you do so? क्या तुम ऐसा ही करते हो? Do you do so? Next, Ankur, no, I don't do it. I swallow it immediately. ठीक है, I swallow it immediately. Situation third. You will find over here Chetan, why are people careless these days about what they eat? Nowadays life is fast. Ankur says nowadays life is fast. Chetan, what do you mean? Is it most important to eat good food? Ankur, but cooking takes a lot of time. Chetan, nobody can eat junk food all the time. Ankur, we can eat sandwich, hamburger, muffins. Okay, hamburger and muffins. Chetan, these are too costly to eat regularly. These are too costly to eat regularly. Ankur, generally I avoid cooking and go to hotel for dinner. I avoid, this word avoid, cooking and go to hotel for dinner. Okay, अगला लेसन आपको पढ़ेंगे दो लेसन, क्योंकि पता है आपका सिलेबस ये भी ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो आपको उसे प्रैक्टिस करने के लिए रह जाएगा. लेसन 10, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज. ठीक है, आई एम टेकिंग योर क्लास. ठीक है, जस्ट इसी तरह से टेकिंग है. टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है. ठीक है, जो नियमित व्यायाम आपको करना होता है वो इसके बारे में पढ़ेंगे.
यहाँ पे पापा और आर्या, ठीक है, पापा और उसके बेटे का नाम आर्या है। वेकअप आर्या, व्हाट्स द मैटर पापा, प्लीज लेट मी स्लीप, इट इज़ संडे टुडे। पापा, नो आर्या, यू हैव हैड इनफ स्लीप, नाउ वेकअप। Arya, okay papa, Arya, you should cultivate the habit of taking exercise daily in the morning. You should cultivate the habit of taking exercise daily in the morning. Next, Arya, but why papa? Why? Again, you have to practice this one. Why papa? Son, exercise is essential as the sound sleep. Exercise is as essential as the sound sleep. Okay. Next, Arya. Papa, we do PT in school. Then what's the need of taking more exercise? What's the need of taking more exercise? Papa, I know Arya, but PT is a part of your curriculum. Part of your curriculum. Look, curriculum. Do you know there is no easier exercise than that? Jogging. There is no easier exercise than your jogging. Okay, Arya. But Papa, I am a child. So what's the need of exercise for me? Papa, by exercising, our body remains healthy and active. We stay fit and do not get obese. ठीक है, ओबीज मतलब मोटापा होता है। डोंट गेट ओबीज। आर्या, बट आई डोंट ईट टू मच, सो आई वोंट गेट फैट। ओके, आई वोंट गेट फैट। पापा, यू आर राइट आर्या, बट एक्सरसाइज इज यूजफुल नॉट ओनली टू प्रिवेंट obesity but also to remove toxicants. Okay, you have to practice this, both the word obesity and toxicant. obesity मोटापा होता है, toxicants मतलब क्या होता है, जहर को दूर करना अपने शरीर के अंदर। toxicants from the body. Arya, Papa, what are the toxicants? Next, Papa, these, पापा कहते हैं these are the unwanted substance. Look how I am pronouncing, कैसे मैं बोल रहा हूँ, substance present in our bodies which should be removed. Arya, okay Papa, I have understood. ठीक है, understood. मैं देखो क्या चीज़ छोड़ देता हूँ, किस चीज़ को पकड़े रहता हूँ, जिसकी वजह से जो होता है शब्द बहुत ही क्लियर और आपको पूरी तरह से सुनाई देता है। ठीक है, आपको उसी तरह से पढ़ना होता है। सब्सटेंस और इधर शुड, रिमूव्ड, बॉडीज़, अंडरस्टूड। ठीक है, सभी चीज़ों का प्रोनाउंस आना चाहिए। ठीक है, पापा यहाँ कहते हैं देन आई होप डैट यू विल टेक अ रेगुलर एक्सरसाइज। आर्या, यस, श्योर पापा, श्योर। ठीक है, श्योर पापा, आयल। ओके, यहाँ ख़त्म हो गया आपका ये लेसन। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। आप इसे सुनिए, जहाँ प्रैक्टिस करने लायक है यू हैव टू डू प्रैक्टिस दिस वे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़ एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।